Good morning, student of class 10th. I hope you are well at home. And our today topic is source of energy and its characteristics. A source of energy is one which has the capacity to provide useful energy. एनर्जी का सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें यूजफुल एनर्जी को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है. And certain expected characteristic of a good source of energy are: it should be easy to transport, it should be easy to store, it should not produce soot and ash, it should be available at an appropriate cost, it should give much more energy than what is spent to bring it to market. एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की करेक्टरिस्टिक्स हैं: इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजीनेस होनी चाहिए. इट शुड बी इजी टू स्टोर. स्टोर करने में आसानी होनी चाहिए, इजी होना चाहिए. इट शुड नॉट प्रोड्यूस सूट एंड एस. किसे जो है सूट एंड एस क्या नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूस मिनिमम होना चाहिए इसमें. इट शुड बी अवेलेबल एट ए अप्रोप्रिएट कॉस्ट. और ये मार्केट में एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए. एंड इट शुड डिलीवर एनर्जी एट द रिक्वायर्ड रेट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम कंटिन्यूसली. इस सोर्स से, गुड सोर्स से एनर्जी रिक्वायर्ड रेट पर और रिक्वायर्ड टाइम पे कंटिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. We can classify the source of energy into two categories: renewable and non-renewable. And renewable source of the first one is renewable source of energy. A source of energy which can be renewed again and again with a relatively short period of time is called a renewable source of energy. renewable source of energy वो source होते हैं जिन्हें हम बार बार जो है renewable कर सकते हैं, like wind energy, solar energy, energy associated with flowing water. Why is nuclear energy considered renewable? Nuclear energy is not a renewable source of energy because nuclear fuels are limited. These are still taken as renewable because the uses of this fuel is in minute quantities, and therefore this source of energy will last for very long period. And next, conventional source of energy. The source of energy which have been in use for a long time and are a major source of energy called conventional source of energy. Example: fossil fuels, energy of flowing water, wind energy, biomass energy. Non-conventional source of energy. The definition of non-conventional source energy is the source of energy which are relatively new and are not a major source of energy called a non-conventional source of energy. Examples are tidal energy, wave energy, ocean thermal energy, geothermal energy. And non-renewable sources of energy. The sources of energy which cannot be renewed again and again in a relatively short period of time are called non-renewable sources of energy. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम बार बार रिन्यूड नहीं कर सकते हैं, लाइक न्यूट्रल गैस, पेट्रोलियम ऑयल एंड कोल. फॉसिल फ्यूल्स. The plants and animals living on earth millions of years ago got very deep inside the earth and were gradually converted under condition of high pressure and temperature into fossil fuels.
Due to a disaster and a flood, the plant and living animals got buried inside the earth. And due to a high pressure and temperature, these plant and animals gradually converted into fossil fuels. Millions of years ago, plant और animals आपकी अर्थ के इनसाइड में बरीड हुई और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.